Good afternoon, all of you. So, in the last class, we did the appointment and removal, okay, of the judges. अब इसमें एक just give a subheading: composition of the collegiums. Composition of the collegiums. Because the composition of collegium for the appointment in Supreme Court and High Court is different, है ना? इसमें just write the collegium for the Supreme Court consists of 5 judges, 5 judges, that is Chief Justice of India and four senior most judges. Since the next CJI should be the member of the collegium, Therefore, in some cases, the Supreme Court collegium can also be a 6-member body. मैंने बताया था कि how it will be when the 4 senior most judges are such that they will not be able to become the Chief Justice because the current Chief Justice has a longer tenure. In that case, the upcoming Chief Justice is made the member of the state. Next paragraph. For the appointment to the High Courts, इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे the Supreme Court collegium consists of 3 judges consists of 3 judges. Try to understand that we have to make appointment in Supreme Court, we have to make appointment in High Courts. Higher Judiciary में ये दो है. When we are making appointment in the Supreme Court, we are doing so by a collegium which is having usually 5 judges. In some cases, it can be 6. But when you are going to select a judge for the High Court, here 2 collegiums are involved. We have one collegium of the Supreme Court, we have another collegium of the High Court. In this case, now the Supreme Court collegium will consist of a 3-member body, one CJI and
2 senior most judges. So when the appointment is to be done in High Court, the Supreme Court Collegium for that will be a 3-member body, and there will be a similar collegium of the High Court having 3 members, here also the CJI and 2 senior most judges. So when the matter is in the appointment of the High Court judges, 2 collegiums are involved, and somehow the consultation from the state is also involved, governor. The Intelligence Bureau is also involved. So whenever the judge is to be appointed, Intelligence Bureau is asked for the report on the judge. If there is anything doubtful, then Intelligence Bureau will send its report to the collegium, and based on that the final decision is taken. तो बस इतना याद रखना है कि when Supreme Court में appointment हो रहा है, only 1 collegium of 5 judges is involved, and when the appointment is in High Court, then 2 collegium of 3 judges each is involved. And yesterday we have already seen this is happening under Article 124 Clause 2, and this is happening under Article 217 Clause. ठीक है, तो इसी में फर्स्ट पॉइंट राइट क्या लिखा आपने, कंसिस्ट ऑफ 3 जजेस. ठीक है, सेकेंड पॉइंट, a high court collegium, a high court collegium consisting of 3 judges in bracket right, CJI and 2 senior most judges. 2 senior most judges. Now give a subheading. Is judiciary part of the state? Is judiciary part of the state? Is judiciary part of the state? We have used this term very often. State, starting से ही हम state से start किए थे, right? But in constitution, this term needs to be defined. बिना definition के how will we know that state constitutes what? And this term has been defined in Article 12 and in Article 36. In Article 12, the definition of the state is with respect to the fundamental rights, because fundamental rights which are in Part 3 of the Constitution has articles from 12 to 35. So very first article is giving the definition of state. Because most of the fundamental rights, they are a prohibition on the power of the state. When you claim your right, it is right against the unlimited power of state only. इसीलिए जरूरी है define किया जाए what is state. Similarly, DPSPs are given in Part 4 of the Constitution, and DPSPs are set of principle which directs the state कि what is to be done. क्या क्या policies लाना है, it tells to the state, and therefore it is important कि you should define what is state. Part 4 consists of articles from 36 to 51, and here also the very first article gives the definition of the state. तभी आप बता पाएंगे कि state को क्या क्या चीजें करनी. So in fundamental rights Article 12 and in DPSP Article 36, both give the definition of state. Now when you look into Article 12,
you will find that the definition of state in Article 12, it includes executive and legislature at union. It includes executive and legislature at state, and it also includes the local bodies, that is panchayats and municipalities. But it has explicitly not mentioned the term judiciary. आप पूछ सकते हैं ना कि सर why are we even discussing that whether judiciary is the part of the state or not? आपने एग्जीक्यूटिव में तो नहीं डिस्कस किया कि whether executive is part of the state. आपने ये नहीं डिस्कस किया कि whether parliament is the part of the state. But when it comes to judiciary, then we are discussing that whether it is part of the state. So this very doubt that whether judiciary is part of the state or not comes from the fact that in Article 12, it has not been explicitly written that judiciary is part of the state. Article 12, it is saying that in this part means we are talking about part 3. In this part, unless the context otherwise requires, the state includes government and parliament. Government basically is referring to executive and parliament of India, government and legislature of each state, local bodies. So you will not find the word judiciary mentioned here, and therefore this doubt comes that whether the judiciary is the part of the state or not. There is another reason to doubt that whether the judiciary is part of the state or not, and that is emerging from Article 13. Now, Article 13 says that any law, Article 13 says basically, general terms mein, that any act of the state which goes against fundamental right is to be declared null and void. Article 13 simple शब्दों में ये कहता है कि any act of the state which violates the fundamental right to that extent will be declared null and void if it is not consistent with fundamental right. ठीक है, यानी स्टेट कुछ भी करे जो आपके फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा. एंड देन इन द डेफिनेशन ऑफ व्हाट इज द एक्ट ऑफ द स्टेट, ये एक्ट ऑफ द स्टेट क्या होगा, इसमें बहुत सारी चीजें दी गई हैं. फॉर एग्जांपल ऑर्डिनेंस, बाय लॉज, रूल, रेगुलेशन, कस्टम्स एंड ऑल. बट कैन यू सी हियर जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट? यहां पे कोई जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट या फिर जजमेंट शब्द का तो यूज नहीं. That means Article 13 is saying that judgment cannot be considered as the act of the state. It also means then judiciary cannot be considered as state. Judiciary का result क्या है? Judgment. And if judgment is not act of the state, that means judiciary is not state. ऐसे हम derive कर सकते हैं. And therefore this doubt came in mind that क्या judiciary को भी हम state का part माने या no. Now for this the Supreme Court has given multiple judgments at different point of times. Multiple judgments इतने जानने की जरूरत नहीं है. But the conclusion of this question is that if you were to ask that whether judiciary is part of the state or not, whether the judiciary is state or not, if this question is being asked, the response should be that judiciary is not the part of the state if it is giving its judicial pronouncements. And judiciary is, yes, it is the part of the state when it is taking any administrative decision. Why we are saying this? We are saying this because हमने इतना तो कहा कि आर्टिकल 12 में स्टेट के डेफिनेशंस में जुडिशरी नहीं दिया है. आर्टिकल 13 में एक्ट ऑफ द स्टेट में the word judgment is not
mention. This is absolutely fine, ये सही है. But it is also a fact कि चाहे Article 12 हो या Article 13, both are giving inclusive definition and they are not giving exhaustive definition. That means look at Article 12 again. Article 12 क्या कर रहा है? State includes this. Article 13 क्या कह रहा है? Law includes this. ये inclusive definition है. It is not exhaustive definition. अब इसमें difference क्या है? Exhaustive definition means when I give a closed list. When I say that student are A, B, C. जब मैं कहता हूं student are A, B, C, it is an exhaustive definition. That means D and E are not student. Students are A, B and C only. But when I say students includes A, B and C, it means that there's a scope that D and E can also be students. So ये जो definition 12 और 13 में दिया है of the state and of the act of the state, it is not exhaustive definition. Something can be added there. There's a scope of adding something. Why? Because the word includes has been mentioned. Plus Article 12 में तो ये भी लिखा हुआ है other authorities, isn't it? Other authorities. That means other than union, state, local bodies, there can be other authorities also which can be added here. So 12 and 13 are not giving exhaustive definition, they are giving inclusive definition. ठीक है. अब यहाँ पे जो inclusive definition आ रहा है, वहाँ में how can we be sure that judiciary is included there or not? तो इस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि whenever the Supreme Court, whenever the judiciary is taking any judicial decision, it is not part of the state. When it is taking administrative decision, it is part of the state. ऐसा क्यों कहा गया? Because imagine कि if we would say कि when it is taking judicial decision, then also it is part of the state. So there can be a situation that the Supreme Court या फिर let us say High Court ने कहा कि किसी पर्सन को 10 years ऑफ जेल हो गया. ये क्या एक जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट? नाउ दैट पर्सन कैन चैलेंज दिस डिसीजन सेइंग दैट इट इज वायलेटिंग माय फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 which says that the personal liberty is guaranteed. So the person will say that judiciary is part of the state. State has taken a decision and that decision is violating my fundamental right. And therefore, under Article 13 is decision को ही finish कर दो. There can be this situation. No? And therefore, the Supreme Court said कि when we are giving any judicial pronouncements, then we are not acting like the state. But when we are taking any administrative decision, अब administrative decision क्या हो सकता है? कि let us imagine a situation when Supreme Court is saying that a recruitment of 100 staff for the Supreme Court is to be done. And Supreme Court is taking decision that only person from this particular caste will be recruited. Others will not be recruited. Now this administrative decision is violating fundamental right because it is discriminating on the basis of caste. And therefore, this can be challenged because it is violating Article 16. तो इसको challenge किया जा सकता. Similarly, let us say that the Chief Justice of India decides that from now onwards, whatever constitutional benches we are going to set, constitutional bench minimum 5 judges का होता है. And if the CJI says that from now onwards on the constitutional bench, only men judges will be there, women judges will not be there. Now this is an administrative decision
and this is violating fundamental rights because this is discriminating on the basis of gender, and therefore this can be challenged. So whenever the administrative decisions are violating fundamental rights, they can very well be challenged under Article 13. It can be challenged under Article 32 if it is violating fundamental rights. And it can also be challenged under Article 226, which gives the power to the High Court. अभी हम देखेंगे आज Article 226. That means इसको challenge किया जा सकता है for violating the rights. But when any kind of judicial pronouncement is coming, you cannot challenge it for violating fundamental rights or any other rights. But this does not mean कि ये डिसीजन चैलेंज ही नहीं हो सकते, ये बिल्कुल चैलेंज हो सकते हैं, बट यू कैन चैलेंज इट थ्रू डिफरेंट रूट्स. आज हम देखेंगे यू कैन चैलेंज इट थ्रू आर्टिकल 137, जिसको कि हम रिव्यू पिटीशन कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट. You can challenge it through Article 136, which we call as special leave petitions. So this can also be challenged, this can also be challenged, but the routes are different. ठीक है. So just write the summary of this. क्या लिखा अभी आपने? Can right. If हाँ, CJI and the 2 senior most judges. नहीं, उसमें हाँ सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर, दोनों केसेस में वहाँ के टॉप 3 जजेस होंगे, विच विल इंक्लूड 1 CJI एंड 2 सीनियर मोस्ट जजेस. हाँ, दोनों मैंडेटरी. ठीक है, चल रहा है. चीफ जस्टिस ऑफ सी, जब भी हाई कोर्ट में जजेस का अपॉइंटमेंट हो रहा है, 2 कोलिजियम्स इन्वॉल्व है. एक कोलिजियम है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें टॉप 3 जजेस हैं. अब टॉप 3 जजेस जब मैं बोल रहा हूं, CJI एंड 2 सीनियर मोस्ट जजेस हो गए. सिमिलरली इन हाई कोर्ट ऑल्सो टॉप 3 जजेस आर इन्वॉल्व्ड, विच मींस 1 CJI एंड 2 सीनियर मोस्ट जजेस. नहीं, टॉप 3 जजेस ऑफ द हाई कोर्ट मैंने कहा तो उसमें ऑब्वियस सा बात है कि CJI होंगे ना. CJI इज द टॉप जज ऑफ द हाई कोर्ट, एनी हाई कोर्ट. तो CJI प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेस, या तो मैं ये कहूं CJI प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेस, या फिर मैं कहूं टॉप 3 जजेस ऑफ दैट कोर्ट. चलो इसको राइट. इफ वी गो फॉर the textual reading of Article 12 and Article 13, we find that the term judiciary is not explicitly mentioned Similarly, in Article 13, the definition of law does not include explicitly the judgments next paragraph,
however the Supreme Court has clarified that the judiciary comes under the definition of state for its administrative decisions therefore the remedy lies in, मतलब यदि सुप्रीम कोर्ट से गलती होता है तो the remedy lies in Article 13, 32, Article 13, 32, ठीक है, 226, क्योंकि यहाँ पे जुडिशरी इन जनरल की बात कर रहे हैं, ठीक है, आर्टिकल 226, ये सारे आर्टिकल्स फिर आने वाले हैं, ठीक है, 13, 32, 226, फॉर नाउ 13 मैंने बता दिया क्या है, 32 इज that if your fundamental rights are getting violated, you can directly go to the Supreme Court, and 226 is that for the violation of any rights, you can go to the High Court. Next paragraph, right? However, the judiciary will not come under the definition of state for its judicial pronouncements. In this case, remedy lies in the mechanism of appeals in bracket write Article 132, to 136, 132 to 136, ये सारे अपील्स के आर्टिकल है, close the bracket, 132 to 136, close the bracket, and through the review petitions, under Article 137, ठीक है। अब इसमें लिखना जरूरी नहीं है, बट एक ये जो टर्म आता है अदर अथॉरिटीज, ठीक है, अदर अथॉरिटीज, when it comes to defining this term other authorities, क्योंकि ये सारी चीजें तो क्लियर है, it is talking about union government, then it is talking about state government, local bodies, but when it comes to other authorities, it is an open-ended term. अब other authorities का ये मतलब नहीं है ना कि कोई private organization को आप कहेंगे कि it is part of the state. You cannot say that, isn't it? कि आप KFC में खाना खाने गए, उसको आप कहेंगे कि आप मेरे rights को violate कर रहे हैं. You cannot say. You are discriminating on the basis of gender. कि आपको लगा वहां पे 2 लाइन लगे हुए हैं, आपको पीछे कर दिया, आप कहेंगे you are discriminating on the basis of gender. I will go in the court under Article 30. So any private organization will not be the part of the state in most of the cases.
Now, in order to define this term, other authorities, एक principle use किया जाता है, that is called as the principle of adjustum generis. Adjustum generis. Now, the principle of adjustum generis simply means that when you have some specified terms which is followed by a general term, we have some specific term and followed by a general term. हम बोलते हैं ना this etc. etc is the general term. Then when you are going to define this general term, it should be of the same nature as the specific terms. जैसे आपसे कहा जाएगा कि you can buy books, copies, pen, etc. तो एक्सेट्रा जो है उसका मतलब ऐसा नहीं है कि आप हार्वेस्टर और ट्रैक्टर जाके खरीद लेंगे, वो कुछ ना कुछ पढ़ाई का ही सामान होगा, स्टेशनरी का सामान होगा, isn't it? कि पेन कहा तो उसके साथ आप पेंसिल इरेजर ले सकते हैं, ठीक है। तो ये एक्सेट्रा मतलब बुक, कॉपी, पेन, इट कैन बी पेंसिल, इरेजर, इट कैन बी शार्पनर। ये थोड़ी कि एक्सेट्रा का मतलब हम ट्रैक्टर खरीदने जा रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। Why? Because the principle of adjustum generis is used. That when you are trying to know the nature of this general term, it should be similar to these specific terms which has been mentioned. It should not be dissimilar. इसको कहते हैं principle of adjustum generis. Anyway, now write the Supreme Court of India. हाँ, नहीं, six member हो रहे हैं, नहीं फिर से समझो, अभी कंफ्यूजन। देखो, हाई कोर्ट के एक जज को अपॉइंट करना है, वहां पे 2 कोलिजियम इन्वॉल्व हो रहा है। एक तो कोलिजियम है जो कि दिल्ली में बैठा हुआ है, ठीक है, और मान लो कि पटना हाई कोर्ट में अपॉइंट करना है, तो एक कोलिजियम है जो कि पटना में बैठेगा, हाई कोर्ट का। Now this collegium will also have 3 judges, this collegium will also have 3 judges. अब 3 judges कौन होंगे? Top 3 judges. So here the top 3 judges in the Supreme Court would be the Chief Justice of India plus 2 senior most judges. And here it would be the Chief Justice of that High Court plus 2 senior most judges. तो टोटल कितने हो गए? बस क्या हुआ? मैं सीजीआई बोल रहा था क्या इसमें? चलो कोई नहीं। किसमें? नहीं, डिवीजन डिपेंड करता है कि वो बेंच रहती है, डिपेंड करेगा कि वो तो चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट विल डिसाइड कि व्हाट इज द ग्रेविटी ऑफ दैट। नॉर्मली डिवीजन बेंच के पास जाता है, 2 जजेस नॉर्मली होते हैं। नहीं, सी इट्स अगेन देयर इज नथिंग एक्सप्लिसिट एज सच। एक ही चीज मेंशन है कि इफ एनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज टू बी डिसाइडेड, if any important question of constitution is to be decided, then minimum 5 judges चाहिए होते हैं, otherwise it depends upon the discretion of the chief justice. There are certain cases जिसमें मान के चलो कि पहले उस पे judgment आ चुका है 5 judges का, 5 judges have already given their judgment on that. So therefore now when that matter will come in the court, then minimum 5 judge की bench बनाई जाएगी। जैसे हमने कल देखा the 3 judges case we saw. Now in the first judge's case, it was a 7 judge bench which happened in 1981, the SP Gupta case. Now when the same matter is coming in 1993 and when it was reversed, it was the 9 judge bench. यहाँ पे कहा गया कि the consultation given is not binding. Here it was said that the consultation given is binding. Now again this matter was raised in 1998 through presidential reference. Here initially 9 judge bench was set up and this bench also said that the decision will be binding. यदि इनको ये फैसला पलटना होता, यदि उनको कहना होता कि it will not be binding,
then they would have set up, इस मैटर को आगे भेजा जाता 11 judge bench के पास. But since they also said the same thing which an earlier 9 judge bench has said, then same strength of the bench worked. एक चीज और ध्यान देना होगा that here the decision was through 7:2 majority. Here the decision was through 9:0 unanimous decision था. But it does not make any difference, because here also we will see that it is the judgment of a 9 judge bench. Here also we are going to say that it is a judgment of a 9 judge bench. So any decision, जैसे हमने देखा केशवानंद भारती case, 7 judges were in favor of basic structure, 6 were against basic structure. But उसको हम 13 judge का फैसला मानेंगे. We will not consider it that ki only 7 judges. We look at the strength of the bench, not at the individual numbers of the judges who are supporting it. ठीक है? चलो. See, it is a general principle कि whenever more and more people are involved, then decision is better. In fact, if you see initial days, जितने जजेस होते थे सभी एक साथ बैठ, इट यूज टू बी व्हाट वी कॉल एज फुल बेंच. फुल बेंच, जैसे कि आपने पढ़ा होगा चंपकम दुराई राजन. सो इट वाज अ फुल बेंच. सिंपली आई थिंक एमपी शर्मा केस रिलेटेड टू राइट टू प्राइवेसी, 8 जजेस, फुल बेंच. आइडियली क्या होना चाहिए, दैट ऑल जजेस शुड सिट, इट शुड बी अ फुल बेंच. बट सिंस प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज वी हैव 80,000 केसेस पेंडिंग. So we cannot have all judges sitting at one point of time. In fact, you will see that in US Supreme Court there are 9 judges and they see the full benches only. Because the Supreme Court speak in one voice, it should speak in one voice. But why different benches are made? Because एक तो process को fast करना है, plus there should be an opportunity कि यदि 5 judge bench ने फैसला दे दिया, उसको आगे यदि challenge किया जाए, 7 judge bench can reverse it. So it is just administrative convenience. ठीक है? Sure, right. आर्टिकल 12, हाँ, आर्टिकल 36 जो मैंने कहा ना, आर्टिकल 36 में वही डेफिनेशन है जो 12 में दिया हुआ. मैंने बताया कि द डेफिनेशन ऑफ स्टेट इज गिवन इन 12 एंड 36 ऑल्सो. बट 36 में आप जाएंगे तो 36 नहीं, तो 36 में भी, 36 के तहत भी द डेफिनेशन ऑफ स्टेट इंक्लूड जुडिशरी. इट मींस कि DPSP are supposed to make Indian state as a welfare state, and it is also putting responsibility on the judiciary to make Indian state as a welfare state. So 36 के तहत भी included. ठीक है? 12 के तहत उसको जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स के लिए नहीं इंक्लूड किया जाएगा. ठीक, आगे बढ़े. चलो, इलेवन ओवर रूल नहीं हो सकता. नहीं, सेम स्ट्रेंथ ऑफ द बेंच कैन नॉट ओवर रूल द जजमेंट. नहीं, दूसरा डिसीजन नहीं दिया. जो 3 जजेस केस हमने कल देखे थे, सो बेसिकली व्हाट हैपेंड, द फर्स्ट जजेस केस, उन्होंने कहा कि द कंसल्टेशन गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट इज नॉट बाइंडिंग. इन्होंने कहा इट इज बाइंडिंग. 7 जज बेंच, तो 9 जज बेंच ने उसको ओवर रूल कर दिया. बट व्हेन वी टॉक अबाउट 1998, यहां पे भी यही कहा गया कि इट इज बाइंडिंग. उन्होंने ओवर रूल नहीं किया था. यदि ओवर रूल करने की जरूरत पड़ती, देन दिस वुड हैव गॉन टू अ हायर बेंच. फॉर एग्जांपल, एक बहुत ही फेमस केस है जिसको हम आगे देखेंगे, दैट इज KS पुट्टास्वामी केस, है ना, जो कि 2017. यस, नाउ दिस KS पुट्टास्वामी केस, इट वाज रिलेटेड टू आधार. ठीक है, आधार से रिलेटेड था. नाउ व्हेन दिस मैटर वाज रेफर्ड टू द कोर्ट, इट वाज रेफर टू अ 5 जज बेंच इनिशियली, क्योंकि मिनिमम 5 जजेस चाहिए होते हैं जब भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करना होता है. बट इट वाज रियलाइज कि इसमें 2 क्वेश्चंस आ रहे हैं. द फर्स्ट वाज रिलेटेड टू द मनी बिल
the categorization of money bill, which is done under Article 110. And the second question which emerged was that can we say that right to privacy is included in fundamental right? This was the second question. Now this particular question was decided by a 5-judge bench only, जो कि एक regular constitutional bench होता है. But this particular question was sent to a 9-judge bench. A 9-judge bench. क्यों? क्योंकि इससे पहले इस मैटर पे कि whether right to privacy is a fundamental right or not, already there were 2 judgments जो कि 8-judge bench और 6-judge bench थे और उन्होंने कहा था कि right to privacy is not a fundamental right. यदि तो now if we have to overrule it तो आपको minimum इससे बड़ी judge bench चाहिए and that was the 9-judge bench. So you can see that in one case only different question go to different benches depending upon कि क्या उनके requirement. ठीक है, नहीं उसमें डिपेंड करेगा आप किसकी बात करेंगे. एक जजमेंट उसका 17 में आया था, एक 18 में आया था. ठीक है, प्राइवेसी वाला 17 में आया था, 9-जज बेंच है. और जब मनी बिल की बात करेंगे दैट इज अ 5-जज बेंच. इट वाज अ 9-जज बेंच एंड द डिसीजन वाज गिवन यूनानिमसली. इनफैक्ट जो 9-जज बेंच थी दे आल्सो ओवररूल्ड द एडीएम जबलपुर केस 1996 जो कि अपने आप में एक 5 जजेस का फैसला था. So it right to privacy 9-judge bench, money bill 5-judge bench. Exhaustive नहीं है. सर तो उसमें आर्टिकल 53 है जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बारे में बात करता है. उसमें डेफिनेशन ऑफ स्टेट में लिखा है यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी. उसमें सर ये नहीं लिखा कि मतलब सारी यूनियन टेरिटरीज में लेजिस्लेचर हो. तो सर अब की और प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होंगे तो कश्मीर वोट नहीं करेगा. इट विल डिपेंड करेगा. अभी जम्मू एंड कश्मीर के साथ क्या है कि इट इज़ इन फ्लक्स, क्योंकि शुरुआत में इवन जो विमेन रिजर्वेशन भी था वो भी उधर नहीं लगाया गया था, बट नाउ इट वाज एक्सटेंडेड. ठीक है, तो अमेंडमेंट वो कर देंगे. उसके लिए बड़ा अमेंडमेंट करने के वो तो आउटसाइड 368 हो जाता है. इनफैक्ट देयर इज वन आर्टिकल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 239A जिसमें पुडुचेरी इंक्लूडेड है, जम्मू कश्मीर को उसी में इंक्लूड किया है. ठीक है, तो यदि रिक्वायर होगा तो कर देंगे अमेंडमेंट. तो पहले तो डेफिनेशन ऑफ स्टेट में लाना पड़ेगा उसको ना. जब तक वो डेफिनेशन ऑफ स्टेट में आएगा नहीं तब तक तो वोट बिल्कुल नहीं कर सकता. तो मे बी दे विल बी मेकिंग दो सूटेबल चेंजेस. तो अभी देखा जाए जम्मू एंड कश्मीर में बहुत सारी चीजें फ्लक्स में है. इनफैक्ट दे डोंट हैव द एंटायर लेजिस्लेटिव पावर ऑन द स्टेट लिस्ट ऑल्सो. तो मे बी इफ द नेक्स्ट टाइम व्हेन द इलेक्शन हैपन देन दे विल इंक्लूड इट इन द नेम स्पेसिफिकली टू दैट पर्टिकुलर आर्टिकल. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. Right. Article 124. Article 124 establishes the Supreme Court of India consisting of a Chief Justice of India, and 33 other judges. 33 other judges. Now, Supreme Court is one court which can be, of course, it is the highest court in India. It is the federal court, but it is significant for various reasons. First of all, any kind of
federal dispute which is of legal nature. Political dispute nahi. That means only if it is related to any legal right of the state, then that will be decided by the Supreme Court. And it will be decided only by the Supreme Court. No other court can look into this particular matter. Then the Supreme Court is also the court wherein the final appeal happens. It is the final court. The remedy of the Supreme Court lies within the Supreme Court only. If Supreme Court makes any mistake, of course, not all judgments can be considered as the right one only. But if you're not satisfied by that, then you have to go to the Supreme Court only. Plus, it is also the final interpreter of the constitutional provision. कि जो भी questions constitution से related है, if there is any ambiguity, then you have to reach out to the Supreme Court, and what Supreme Court says is the final one. And if Supreme Court has to change that, it will be done by the Supreme Court itself through a larger judge bench. मैंने बताया right to privacy. Even Supreme Court was asked in 50s and 60s कि क्या right to privacy fundamental right है? Supreme Court said no. But it corrected its judgment in 2017 in the case Puttaswamy case. In fact, the authority of Supreme Court is such that even President of India will take advice from the Supreme Court only. If President of India has certain confusion related to any important question of law or constitution, then she will ask from the Supreme Court that what is the actual meaning of it. So in that way you find that Supreme Court definitely is one institution which has this responsibility of protecting the constitution, upholding the constitution, and it has a different level of powers that has been given by the constitution. Article 124 says that there will be a Supreme Court in which there will be one Chief Justice of India, and initially it was the 7 judges. But the number of judges can be increased by the law made by Parliament, and currently we have total of 34 judges, one Chief Justice of India, and we have 33 other judges. ठीक है, इसमें next paragraph, right? The number of judges can be increased through a law made by Parliament. Through a law made by Parliament. Next paragraph. Schedule 3. Schedule 3 gives the oath of Supreme Court judges. Supreme Court judges. अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है that the oath of a Supreme Court judge is same as the CAG of India, Comptroller and Auditor General. It is an office which has been established under Article 148, and its function is to audit the account of union government, state government and public sector units. ठीक है, primarily इनके करता है, PPP projects को भी कर सकते हैं. So the judge of the Supreme Court and CAG, they have the same oath, and primarily they are responsible for following the constitution and upholding the constitution. This is the difference. In fact, even ministers, they don't take the oath of upholding the constitution. They take the oath
of following the constitution and maintaining the secrecy. But this special responsibility of upholding the constitution has been given to the CAG and तो इसमें लिखेंगे, right? Supreme Court judges, इसी पैराग्राफ में, Supreme Court judges take oath for इसको सब पॉइंट्स में लिख देंगे, for allegiance to the constitution, allegiance to the constitution, second sub point, upholding the sovereignty and integrity, upholding the sovereignty and integrity. Third point, protecting the constitution, protecting the constitution. ये ओथ किसके सामने ली जाती है? प्रेसिडेंट. ठीक. नेक्स्ट पैराग्राफ, राइट. राइट. The salaries and allowances of Supreme Court judges has been provided in Article 125, and is determined by Parliament, and is mentioned in second schedule. Second schedule. It cannot be varied. It cannot be varied to the disadvantage except during a financial emergency. Except during a financial emergency. In bracket, right, Article 370. Article 370. Sorry. 370 पे चला गया. 360. जम्मू कश्मीर की बात हुई तो लगता है 370 360. अब देखो, ये कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटी किया गया है आर्टिकल 125 में दैट इट कैन नॉट बी वेरीड टू द डिसएडवांटेज. कम नहीं किया जा सकता. It will not be decided by the government, rather it is being decided by the parliament. ठीक है, so that if at all the control, it should be of the legislature and not of the executive. ठीक है. Upholding basically means you have to protect the constitution. You have to protect the constitutional values. ठीक है. That means if executive or legislature, they are trying to play with the constitution, then judiciary has taken oath of protecting the constitution. And in fact this oath जो मैंने schedule 3 में लिखाया, जब हम judicial activism देखेंगे ना, it is this oath which has made judiciary very powerful. And there have been many cases wherein judiciary has made its way
by saying that we have taken the oath of protecting the constitution. जैसे हमने अभी डिस्कस किया मनी बिल से रिलेटेड, which is given in article 110, the definition. Same article 110 clause 3 says that whether a bill is money bill or not is to be decided by the speaker and his decision is final. ये बहुत clearly लिखा हुआ है. Yet the Supreme Court has reviewed the decision of the speaker whether the bill is money bill or not, saying that we are the protector of the constitution. वो हम देखेंगे जब हम फेडरलिज्म टॉपिक करेंगे. So basically upholding the constitution means protecting constitutional values. ठीक है, चलो. Now this has been provided currently the Supreme Court judges. If you see originally Supreme Court judge Chief Justice को मिलता था 10,000 रुपए, ठीक है. इसे इनफैक्ट मिलता था 5,000 रुपए, ये बढ़ा के किया गया था. And the other judges will get 4,000 which was inclusive to 9,000 per month की बात हो रही है. ठीक है, इतने से तो काम चलने वाला है नहीं. ठीक है, तो कहाँ से काम चलेगा. मतलब इनिशियली इट वाज 5,000 जिसको बढ़ा के इतना कर दिया गया. एंड दिस currently it has been increased by this particular act, Salaries and Condition of Service Amendment Act 2018, and currently the Supreme Court judges get 2,80,000, the Chief Justice gets 2,80,000 and other judges they will get 2,50,000. नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है. हो सकता है प्रीलिम्स में ये कह दे कि द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड अदर जजेस हैव नो डिफरेंस इन द सैलरीज, और कभी कभी लगता है ऑब्वियस क्योंकि अल्टीमेटली चीफ जस्टिस भी तो एक जज ही है. बट नंबर्स दे विल नॉट गो इनटू, बट इतना ध्यान रखना है कि इट इज नॉट इक्वल. नहीं, इतना ही है. एक्सपीरियंस के साथ क्या बढ़ता है. नहीं, प्रमोशन अब क्या होगा तो चीफ जस्टिस. नहीं तो ये तो दिस इज फॉर द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ना, तो दो ही हो गए ना. एक तो सीजीआई होगा जिसको मे बी दैट इज ओवर. दिस इज बेसिक. इसके ऊपर भी इफ यू गो इनटू डिटेल देन दे गेट अदर अलाउंसेस ऑफ 45,000, 10%, वो सारी चीजें होती हैं. मे बी इंटरेस्टिंगली यूएस सुप्रीम कोर्ट के जज का जो ये होता है इसका डबल होता है. मतलब इफ यू एडजस्ट इट बाय इन्फ्लेशन ऑल्सो, मतलब आप जो परचेजिंग पावर पैरिटी से भी एडजस्ट करेंगे तो इट विल बी डबल ऑफ व्हाट द जजेस गेट इन इंडिया. ठीक. एनीवे नंबर इंपॉर्टेंट है, बस एक नोट लिख दो. हाँ, वहां डबल है. नहीं, बाकी ये तो यूज भी नहीं होता हो. ये तो बस ऐसे पासबुक प्रिंट कराने के लिए कभी करवा लिया तो करवा लिया, अदरवाइज इसका तो काम भी नहीं पड़ता होगा. कहाँ काम पड़ेगा बताओ. किराया देना नहीं है ड्राइवर. दे आर डिफरेंट लॉज. दिस इज द बेसिक वन. दिस इज द बेसिक वन. इट कैन नॉट बी वेरी टू देयर डिसएडवांटेज. हाँ, प्रोवाइडेड की फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं. हाँ, फाइनेंशियल इमरजेंसी में कर सकते. चलो एक बस एक नोट लिख दो. नोट, सीजेआई एंड अदर जजेस have different salaries. All right, next paragraph. Article 126 provides for the appointment of the acting chief justice. Acting chief justice. अब you will find that Indian Constitution, it has 3 articles which is providing mechanism that when the chief justice is not there, then there should be one acting chief justice. Article 126 is mentioning it. Then Article 127 gives the detail कि if in the Supreme Court
नंबर ऑफ जजेस कम हो जाते हैं, तो फिर आप कहाँ से जज लाएंगे? सो यू कैन गेट जजेस फ्रॉम द हाई कोर्ट्स. एंड आर्टिकल 128 सेज कि देयर कैन बी केसेस जब आप रिटायर्ड जजेस को भी सुप्रीम कोर्ट में ला सकते हैं. बट फॉर दैट द कंसेंट ऑफ बोथ द प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड एंड द कंसेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर जज. आप उसको फोर्स नहीं कर सकते कि आपको आके यहाँ पे काम करना पड़ेगा. इनफैक्ट दिस इज डिफरेंट देन अदर प्रोफेशंस. फॉर एग्जाम्पल मेडिकल प्रोफेशन की बात करें, देन यू कैन बी फोर्स्ड. जैसे हमने देखा देयर कैन बी सिचुएशन, आर्टिकल 19 में इसका एक्सेप्शन भी दिया गया है कि देयर कैन बी सर्टेन सिचुएशन व्हेन गवर्नमेंट कैन मैंडेट कि आपको काम करना पड़ेगा आगे. ठीक है, कोविड में हमने देखा कि इट वाज अ मैंडेट कि यू विल हैव टू कम एंड वर्क. बट हियर वी आर सीइंग अ डिफरेंस दैट इट विल ओनली बी आफ्टर द कंसेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर जज. So Article 126 is providing for the appointment of a judge as a Chief Justice of India. 127 High Court judges coming to the Supreme Court, and then 128 retired judges coming to the Supreme Court. And this will be done when there will be lack of quorum. That means quorum means minimum number of judges that is required. क्या मिनिमम नंबर ऑफ जजेस है? इट इज नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड. अगेन इट डिपेंड्स अपॉन द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. कि मान के चलिए कि एक 11 जज बेंच चाहिए और आपके पास उतने जजेस नहीं है, दैट मीन्स इट इज लैकिंग quorum. So in that case the chief justice of India can bring certain judges of the high court. When they are in the Supreme Court, they will be getting same privileges, power and allowances as the judge of the Supreme Court. ठीक है, तो राइट आर्टिकल 126 हमने कहा इट प्रोवाइड्स दैट, इसी पैराग्राफ में इट प्रोवाइड्स दैट when the Chief Justice of India's office is vacant, President may appoint अब यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाने के लिए हाई कोर्ट से लोग नहीं लाए जाएंगे, इसमें ध्यान में रखना है. बिकॉज यहाँ पे ये कह रहा है कि प्रेसिडेंट मे अपॉइंट वन ऑफ द अदर जजेस ऑफ दैट कोर्ट, ऑफ दैट पर्टिकुलर कोर्ट. ठीक है, मे अपॉइंट वन ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, one of the judges of the Supreme Court as Chief Justice. अब ऐसा कुछ मेंशन नहीं, as the Chief Justice. Next paragraph. Article 127 provides for the appointment of ad hoc judges when there is lack of quorum, this appointment देखो, if you look into the bare acts, you will find कि वहां पे लिखा है National Judicial Appointment Commission, but we know that in the 4th judges case इसको हटा दिया गया है. So therefore it is being done by the Chief Justice of India after getting consent from President and after consulting the Chief Justice of that particular High Court. पता लगा आप उस High Court से judges बुला लिए तो वो कैसे काम करेंगे, तो you'll have to consult. ठीक है, तो क्या लिखा, दिस अपॉइंटमेंट
is done by the Chief Justice of India, with previous consent from the President and after consultation with the Chief Justice of that High Court. Chief Justice of that High Court. Next, right. Article 128. Article 128 provides that even retired judges can be appointed as the Supreme Court judge by CJI with previous consent of the President. As well as the consent of that judge. Now give a subheading: contempt of court. हाँ जी. तो वो तो उनका ओपिनियन था ना, मतलब दिस आर्टिकल 128 विल अप्लाई व्हेन एक्चुअली दैट अपॉइंटमेंट इज हैपनिंग. सो उनका ये कहना था कि जो रिटायर्ड जजेस हैं दे शुड बी इनकरेज टू कम देयर. तो ठीक है, मतलब इट इज डिस्टेंटली रिलेटेड टू 128, बट एक्चुअल ये प्ले में तब आएगा बट व्हेन द एक्चुअल अपॉइंटमेंट इज हैपनिंग. मतलब इफ योर क्वेश्चन इज कि यदि वो अपॉइंट किए जाते हैं तो कैसे अपॉइंट किए जाएंगे, it will be through this particular list. Maybe he was also referring to some kind of arbitration that can be done. मतलब जो रिटायर्ड जजेस होते हैं ना, इवन आफ्टर रिटायरमेंट वो आर्बिट्रेशन के लिए काम करते हैं. तो maybe he was referring to that. I'm not very sure. But if they have to come to the Supreme Court, first of all ये तभी होगा जब there will be vacancies, when there will be lack of quorum. यदि already judges रहेंगे तो फिर तो कोई mechanism नहीं है यहाँ पे आ सके. हाई कोर्ट. ठीक, चलो. नाउ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. नाउ दिस रिलेट्स टू आर्टिकल 129 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है. अब आर्टिकल 129 जो है ना, वो सुप्रीम कोर्ट को डिक्लेयर करता है एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड. इट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, which simply means that Supreme Court's decision
कैन बी यूज्ड एज अ लीगल प्रेसिडेंट, उसका यूज करके आप दूसरे केसेस में रेफर कर सकते हैं. सो आर्टिकल 129 सेज that the Supreme Court shall be the court of record and shall have the power of such a court, including the power of punishing for contempt. So Article 129 basically says two things. First, it declares Supreme Court as court of record. इसका मतलब ये है कि whatever proceedings are happening in the Supreme Court, that is going in the judgment, it can be used in अदर केसेस. कि सुप्रीम कोर्ट में कुछ भी, जैसे हम बात करें केस पुट्टा स्वामी में ये चीज कही गई थी, यू कैन कोट दैट पर्टिकुलर लाइन इन सम अदर केसेस इन ऑर्डर टू जस्टिफाई योर पॉइंट. व्हाई? बिकॉज एवरीथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड. सो एनीथिंग इज विच इज बीइंग गोइंग इन द जजमेंट इज इफेक्टिवली एक्टिंग लाइक अ लॉ. अब एक आर्टिकल 142 भी है जो हम देखेंगे, which says that the Supreme Court can pronounce laws, but यहाँ पे court of record का भी ये मतलब है कि whatever has come in the judgment of the Supreme Court can be used for arguing your case in other matter. Secondly, what it means is that Supreme Court can punish for its contempt. Contempt. अब ये provision क्यों दिया गया है? The provision has been given because if you see originally before separation of power, there used to be one authority, the king or the monarch. The king itself was what? State. The king was making the law, he was executing the law, he was also acting like a judge. So आप देखेंगे that king will be sitting in his court, and then the petitioners would come, they will argue, and king जो भी कह देता था वही माना जाता था. When this king was replaced by a constitutional setup, a state emerging from constitution, it was divided into three organs: legislature, executive and judiciary. और ऐसा माना जाता है कि king has authorized them, king has authorized the legislature. जैसे हम बात करें यूके की, so king, the monarch has authorized legislature to make law, the king has authorized the executive to implement it, and king has authorized the judges to adjudicate the matters. But what will guarantee that जो चीज ये judges कह रहे हैं उस चीज को follow किया जाएगा? क्योंकि if king is saying something, that everybody will follow, either because of respect or because of fear, but वो चीज तो मानी जाएगी. But when king is saying कि these are 10 judges, इनकी बातों को मानना है, there is no guarantee that people will accept that. कोर्ट ने कहा कि आपको ये काम नहीं करना है, अब कोर्ट आपके पीछे दो पुलिस वाले तो लगाएगा नहीं कि अब देखो कि ये कर रहा है कि नहीं कर रहा. कोर्ट आपको ट्रैक तो करेगा नहीं. ठीक है. How will you make sure, how will the court make sure कि you are following what the court is saying? मान के चलो कि as the commissioner of that municipality, you have been instructed by the court कि ये particular stretch of जो road है वो बन जाना चाहिए within 1 month. अब कोर्ट थोड़ी ना 1 महीने के बाद आएगा फोन करने कि वो बना कि नहीं बना. बट व्हाट विल गारंटी कि आप आके उस काम पे एक्शन ले रहे हैं या फिर आप भूल जाए. एंड फॉर दैट द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पावर हैज बीन given. That if the court is saying something, it has to be followed. If not, then the court has the power to punish you. Simple. So एक लाइन में कहा जाए क्यों कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लाया गया है? फॉर इंश्योरिंग कंप्लायंस. अदरवाइज कोर्ट के पास क्या है? कोर्ट इज नॉट हैविंग एनी पुलिस फोर्स ऑल्सो. कम से कम एग्जीक्यूटिव्स के पास दे हैव द डिफेंस फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस. कोर्ट इज नॉट हैविंग एनी पुलिस फोर्स. So let us imagine a situation that there's a patch of land that belongs to a poor farmer and that is being encroached by a very powerful person of that locality. ठीक है. And that person is going to the court और court ने पाया कि ये जमीन सच में इसी की है. And the court said to this person who was trying to encroach कि आज से आप ये एक्शन नहीं करेंगे. हो सकता है इन्होंने वहां पे कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट करवा दिया था.
कोर्ट ने कहा कि वो कंस्ट्रक्शन टूटेगा और आपसे बात यू विल नॉट बी डूइंग। नाउ व्हाट इज द गारंटी दैट सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया दिल्ली में, मे बी दैट इज अ फार्मर इन मिजोरम, व्हाट इज द गारंटी कि दिस पर्सन विल नॉट ट्राई टू इंक्रोच अपॉन हिज लैंड अगेन? सुप्रीम कोर्ट तो वहां रहेगा। And that's why the contempt power has been given, that if you violate the order of the court, Supreme Court, you will be punished. Why? Because you have made the contempt of that particular order. This is provided in Article 129. Some plans के लिए किया। And there's one act also, that is the Contempt of Court Act 1971, which provides the details कि actually contempt है क्या, क्योंकि अभी हम when we are saying contempt of court, it should be defined that what is contempt, किस हद तक किस action को contempt माना जाएगा। Now this act says that contempt can be of two types. It can be civil contempt, it can be a criminal contempt. दोनों में ऑर्डर नहीं फॉलो किया जा रहा है, बट द डिफरेंस इज दैट इन सिविल कंटेम्प्ट you are engaging in willful disobedience. Willful disobedience. You are not respecting the order of the willful disobedience. Now, both these words are very important, willful and disobedience. Because there can be certain disobedience which may not be willful. For example, let us say कि दो फ्रेंड्स में झगड़ा हो गया, वो कोर्ट गए, ए एंड बी, पता चला था कि ए ने बी को पीटा था, कोर्ट गए. Now the court gave this order to A that from now onwards you are not going to touch this person B. फैसला आ गया. नेक्स्ट डे व्हाट हैपेंड कि इनका एक और फ्रेंड था C. उसने क्या किया, A का हाथ पकड़ के B को ऐसे पटवा दिया. होता था ना बचपन स्कूल में, कर देते थे ऐसा. A का हाथ पकड़ा और B को पट दिया. Now disobedience has happened. Disobedience has happened because कोर्ट ने कहा था you will not touch that person. इन्होंने थप्पड़ मार दिया. But is it willful disobedience? It is not willful disobedience. ये तो इनकी गलती थी, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए इनको पनिश किया जाएगा, इनको पनिश नहीं किया. दिस इज willful disobedience. You are not agreeing to the नहीं लग सकता है, क्यों नहीं है, वो कोर्ट का ऑर्डर था, उन्होंने उसको नहीं फॉलो किया. ठीक है, एक्सप्लिसिटली देखा, मतलब इम्प्लिसिटली देखा जाए तो ही हैज वायलेटेड. नो, B was not to be hit by A, but this has happened and the causal force is C only. एक imaginary idea समझ गया ना हम क्या बोल रहे हैं. ठीक है. Second is what we call as criminal contempt of court. Criminal contempt. Criminal contempt of court means कि आप ऑर्डर तो नहीं ही फॉलो कर रहे हैं, you are trying to interfere in the process of justice. आप उसमें इंटरफेरेंस कर रहे हैं, और यू आर ट्राइंग टू स्कैंडलाइज द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. आप यू आर क्रिएटिंग स्कैंडल आउट ऑफ नथिंग. फॉर एग्जांपल, इस केस में यदि ये जो फैसला आया दैट ए विल नॉट टच बी, इट मे हैपन that A will come out of the court and he will start saying in public, he will start writing article, he will start giving interviews to the news channel that since I belong to this particular caste and that's why the court has given the judgment against me and in favor of B. So हो सकता है कि उस चीज को scandalize करने की कोशिश करना, ये कहने लगे since I belong to the minority community therefore court is not favoring me, it is favoring B. Now what you are trying to do? You are trying to scandalize one judgment जिसका कि ऐसा कोई consideration नहीं था. और sometimes you will see that media trial happens. कुछ हुआ, सारे न्यूज़ जो चैनल्स हैं वो खुद ही बताने लगते हैं कि किसकी गलती थी, किसकी गलती नहीं थी. अब तो AI आ गया है, AI से तो वो लोग वहाँ पहुँच भी जाते हैं.
यूक्रेन वॉर में पहुंच जाते हैं हेलीकॉप्टर पे बैठ के, काउंटिंग होती है, इलेक्शन की काउंटिंग होती है, तो हेलीकॉप्टर पे बैठ के वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में घूम घूम के जाके ऐसे बता देते हैं कि यहाँ पे ये हो रहा है। तो एनीवे, तो जैसे when the West Bengal Arjikar medical that instance happened, then there were news channels who were doing media trials. Now what happens because of this, that the process of judiciary, it gets interfered, क्योंकि पहले ही public opinion बन जाती है, and when public opinion will be built, it will be very difficult to give a judgment जो कि judicially correct रहे, legally correct रहे. So in that case, what Supreme Court said, that you are not allowed to publish anything on this until unless we are giving any judgment on that. So this is the civil contempt of court. If you are found guilty of this, then generally आपको jail नहीं होता है, it's some kind of fine that you have to pay. But if you are found guilty of criminal contempt of court, along with fine, there can be a jail maximum of 6 months. This is called as contempt of court. Now there are various aspect of it कि किस केस में contempt माना जाएगा, contempt नहीं माना जाएगा. For example, the law says that if I am speaking truth, even if it is resulting in the contempt, उसको contempt नहीं माना जाएगा. For example, if I say that Supreme Court's is not efficient, I am saying this on the basis कि 80,000 cases pending. Now this is truth. So anything which is backed by truth, okay. If I say that Supreme Court is a body wherein there's a dominance of the male community या फिर upper caste community, और वो प्रोफाइल में साफ दिखता है कि there are very few women judges, there are very few men. So this is a truth. I cannot be punished for contempt of court until unless कि मैं उससे और कुछ चीज derive करके आगे. So contempt of court happens only when in these two cases you are saying. Ideally contempt of court एक ऐसा tool है जो कि minimum use होना चाहिए. It is an exceptional tool which has been given. The Supreme Court has been given this under Article 129 and High Court has been given this under Article 250. It has not been given to the subordinate courts. उनके कंटेम्प्ट के लिए या तो हाई कोर्ट पनिश करता है या फिर इवन सुप्रीम कोर्ट कैन पनिश, बट सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैव नॉट बीन गिवन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पावर, क्योंकि ये एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस है, ओनली टू बी यूज्ड इन एक्सेप्शनल केसेस. बिकॉज इफ द कोर्ट इज यूजिंग कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोविजन वेरी ऑफन, इट इन इटसेल्फ शोज कि कोर्ट की लेजिटिमेसी कम हो रही है. Isn't it? मान के चलो कि कोई सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है किसी डिस्ट्रिक्ट में, आइडियली क्या होना चाहिए कि एक बार वो खड़े होकर माइक में ऑर्डर दे दे, पीपल शुड फॉलो. यदि उसको बार बार फोर्स का यूज करना पड़ रहा है, फायरिंग होनी पड़ रही है, लाठी चार्ज होना पड़ रहा है, दैट मीन्स देयर इज अ डिक्लाइन ऑफ लेजिटिमेसी, पीपल आर नॉट रिस्पेक्टिंग, isn't it? So use of contempt of court is to be used only in rare cases. And in fact, जो एक केस हुआ था चंपकम दोराईराजन केस, in which it was the first judgment on reservation, and the Supreme Court gave its verdict against reservation. चंपकम दोराईराजन ने रिजर्वेशन के खिलाफ पिटीशन डाला था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा इट्स ओके. So it was a judgment against reservation. Ambedkar had publicly criticized that particular judgment. Ambedkar said that as a citizen of India, I will follow that judgment, but I am not bound to respect that judgment. मैं बिल्कुल उसको criticize कर सकता हूँ. So contempt of court is a provision which has been provided just to make sure कि चीजें order हो जाए. ठीक है, इसको लिखें. तो डिपेंड करता, मैंने कहा ना कि जुडिशरी विल ऑल्सो चूज दिस बैटल वाइजली. यदि सब पे आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाने लगे तो फिर तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा ना. जैसे कि मान के चलो एक टीचर है, अब वो स्टूडेंट है, बात कर रहे हैं, अब मैंने टीचर ने क्या किया कि कह दिया तुम बाहर जाओ. एक बार मैंने किया 4-5 क्लासेस में या फिर 20-25 क्लासेस में, इट विल मेक सेंस. यदि हर क्लास में आके यदि मैं 10 स्टूडेंट को बाहर ही निकालने लगूं तो फिर इसका कोई मतलब नहीं रहेगा. तो मैं यहाँ निकल ही जाना आधे क्लास के बाहर से, तो
So it is a power which is to be used only in rare cases when people are actually not following. It's not to be used. नहीं तो ये ज्यादा कम तो जुडिशरी डिसाइड करेगी ना. वैसे तो एक केस है प्रशांत भूषण का नहीं, उनको तो माफ कर दिया उन्होंने, ठीक है. और वो जो उन्होंने शूज फेंका था उन पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो भी नहीं सकता था, वो तो पर्सनल इट वाज था ना. ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, कोर्ट है, ठीक है. इनफैक्ट यहाँ पे इफ यू वुड हैव नोटिस्ड, contempt of court is also a classic example of being judge in your own case, क्योंकि यहाँ पे कंटेम्प्ट किसका हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट का, और डिसाइड कौन कर रहा है कि कंटेम्प्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करे. तो ये तो प्रिंसिपल जो नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल है उसको भी वायलेट कर रहा है. एंड द वे कोर्ट्स हैव बीन यूजिंग इट, ये भी नहीं. इनफैक्ट मैं एग्जांपल जो दे रहा था, प्रशांत भूषण, उन्होंने एक ट्वीट किया था. He tweeted against the Chief Justice of India, the then Chief Justice. उन्होंने ये ट्वीट किया था, ठीक है. The tweet was that it was against the then Chief Justice, Justice Bobde. उन्होंने ट्वीट किया था कि CGI writes a 50 lakh motorcycle belonging to a BJP leader at Raj Bhavan Nagpur without a mask or helmet at a time when he keeps the Supreme Court in lockdown mode, denying citizen their fundamental right to access justice. कि कोर्ट बंद करके वहां पे जाके बाइक चला रहे, ना ही हेलमेट पहना है ना ही मास्क पहना है. इस पे चीफ जस्टिस ने कहा था कि अभी बाइक स्टार्ट का है, हेलमेट क्यों पहनेंगे, ठीक है, तो मास्क तो पहन सकते हैं. अब इन पे इनके जो प्रशांत भूषण, उन पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग गया था, एंड दैट ऑल्सो क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. इट वॉज नॉट जस्ट द सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, इट वॉज क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. तो इसका इनफैक्ट इसका दूसरा तमाशा चला था. He tweeted this. There were two tweets that was made by Prashant Bhushan. One was this bike related, and there was another tweet which said that in last 6 years, the Supreme Court's decisions have destroyed democracy in this country. Now this tweet is being made in 2020. So last 6 year कहाँ से हुआ? 2014 से, ठीक है. यानी इनका ये कहना था कि 2014 के बाद से 2020 तक जो सुप्रीम कोर्ट्स के डिसीजन है, दैट हैज डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी इन इंडिया. टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ दिस, अ क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वाज इनिशिएटेड अगेंस्ट प्रशांत भूषण, एंड इट वाज नॉट जस्ट अगेंस्ट प्रशांत भूषण, इट वाज आल्सो अगेंस्ट ट्विटर इंडिया, क्योंकि ट्विटर इंडिया जो ट्विटर पे ही तो प्लेटफॉर्म यूज हुआ था, ठीक है. इसकी सुनवाई हुई, अर्जेंट हियरिंग हुई, इसकी अर्जेंट लिस्टिंग हुई, सुनवाई हुई, एंड प्रशांत भूषण ही वाज आस्क्ड टू अपोलोजाइज. इस केस में होता है कि कोर्ट कहता है कि आप पब्लिकली अपोलोजाइज कर देंगे, माफी मांग लेंगे, तो हम, आपने हमारा कंटेम्प्ट किया पब्लिकली, आप पब्लिकली माफी मांग लो. सो द कोर्ट सेड कि इफ यू पब्लिकली से सॉरी दैट आई वाज रॉन्ग, देन वी विल लेट यू गो. प्रशांत भूषण सेड मैं नहीं कर सकता. He said that if I apologize publicly, it will be a contempt of my own conscience and of the institution in which I have believed. So I will not apologize. तो जजेस ने सजा सुनाया. The punishment was, दो पनिशमेंट थे, दोनों में से कोई एक सेलेक्ट कर लो. एक पनिशमेंट था कि या तो 3 महीने की जेल और 3 साल तक आपको प्रैक्टिस नहीं करने दिया जाएगा, और दूसरा था कि आपको फाइन जमा करना पड़ेगा, 1 रुपए का फाइन, ठीक है. प्रशांत भूषण ने इस पे काफी सोचा, और लास्ट डे था, उस दिन उन्होंने अपने बैंक अकाउंट से 1 रुपए निकाला और उन्होंने जमा कर दिया सुप्रीम कोर्ट में. और न केवल जमा किया उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में, ही ऑल्सो चैलेंज दिस पर्टिकुलर डिसीजन review petition under article 137, and all this is happening in COVID, जब 80,000 केसेस पेंडिंग है, ये केस चल रहा है, ठीक है. तो एनीवे, अब जो भी कहा जाए, जस्टिस बोबडे. तो अब इसमें क्या देखा जा रहा है कि हियर एक्चुअली इफ जस्टिस बोबडे वाज हर्ट बाय दैट ट्वीट, ही शुड हैव यूज्ड द प्रोविजन ऑफ डिफेमेशन rather than contempt of court, because it was an individual criticism.
तो अ जज इज नॉट कोर्ट, अ जज इज इंडिविजुअल. आप डिफेमेशन के तहत जाए, सेक्शन 499 500 के तहत जाए, बट यूजिंग कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वाज समथिंग व्हिच वाज नॉट अप्रिशिएटेड. ठीक है, इसको लिखिए. क्वेश्चन था आपका. क्रिमिनल कंटेम्प्ट इसलिए हुआ क्योंकि द वे इट वाज इंटरप्रेटेड that through this tweet he is trying to scandalize the role of the Supreme Court. जो उन्होंने second tweet किया that from 2014 last 6 years the Supreme Court has destroyed democracy through its judgment. So he is trying to scandalize the role of the Supreme Court. Evidence की बात ये subjective matters होते हैं. And second thing is अब आई डोंट नो उन्होंने ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया और हमें पता नहीं क्या हुआ, हमें नहीं पता क्या हुआ था, बट ही मेंशन 6 years. ठीक है, तो अगेन दिस आर सब्जेक्टिव थिंग्स, ये कोर्ट इंटरप्रेट करती है. ठीक है, लेट अस से कंटेम्प्ट ऑफ, लेट अस से एज एन इंडिविजुअल, यदि आप कह रहे हैं योर कंटेम्प्ट, दैट इज सब्जेक्टिव मैटर, मुझे लगेगा इट इज कंटेम्प्ट. हाँ, आइडियली डिफेमेशन लगना चाहिए. ठीक है, इसको लिखते हैं. राइट, लाइक आर्टिकल 129, आर्टिकल 129 declares that the Supreme Court shall be a court of record, and shall have the power to punish for its contempt. Power to punish for its contempt. Is in this only, right? Next paragraph. As per the Contempt of Court Act, as per the Contempt of Court Act 1971, 1971, contempt can be write in points, criminal contempt can be criminal contempt in bracket, right, scandalizing the court's judgment, comma, interfering with judicial proceedings, comma, lowering the authority of the court. Second point, right? Civil contempt, authority of the court, मतलब जैसे कि एनीथिंग दैट यू से, जिसको कि लगता है कि कोर्ट, इट इज एन ओपन एंडेड टर्म. जैसे प्रशांत भूषण के केस में क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि लास्ट 6 years से जजमेंट से डेमोक्रेसी खराब हुई है, तो यू आर ट्राइंग टू लोअर द अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट. ओपन एंडेड टर्म. ठीक. सिविल कंटेम्प्ट इन ब्रैकेट, राइट, विलफुल डिसओबीडियंस, willful disobedience.
इसमें गिव अस अ बिडिंग. What is not a contempt? What is not a contempt? Right. As per Contempt of Court Act 1971, as per Contempt of Court Act 1971, following cannot be considered as contempt. Following cannot be considered as contempt. पॉइंट्स में लिख देंगे. Innocent publication and distribution. Innocent publication and distribution. यदि आप प्रूफ कर दे कि हमें पता ही नहीं था कि इससे कुछ गलत होने वाला है तो. सेकंड, fair and accurate report of judicial proceedings. Fair and accurate report of judicial proceedings. ठीक है. That's why you will see that whenever Hindi news channels they interpret, they translate the what was said in the court, वो कहते हैं, they give a disclaimer that the judgment is in English, ये उसका हिंदी अनुवाद है, so that यदि थोड़ा इधर उधर हो जाए तो they keep a scope for that, because it should be a fair and accurate reporting of the judicial proceedings. ठीक है. Next, right? Fair criticism of the Judicial Act. Fair criticism of the Judicial Act. अब ये बहुत ही पैराडॉक्सिकल है कि ये फेयर है कि नहीं है, ये कोर्ट ही डिसाइड करेगा. तो भाई आप आके शिकायत करेंगे हमारे, आप कहेंगे सर आपका फेयर ही क्रिटिसिज्म है, हमें नहीं लगेगा फेयर. वो आपको लग रहा है कि फेयर क्रिटिसिज्म, हमें वो फेयर क्रिटिसिज्म नहीं लगेगा. सो अगेन इट इज बीइंग जज्ड इन योर ओन केस. एक और पॉइंट लिख दो. राइट. Punishment cannot be given for contempt if there is justification by truth. Justification by truth. Or if it is in public interest. Or if it is in public interest. Justification by truth मतलब एनीथिंग, एनी एविडेंस दैट यू कैन प्रोवाइड, है ना. हो सकता है आपने कुछ स्टेटमेंट किया, आजकल तो एप्स्टीन फाइल ही चल रहा है बहुत. आपने कुछ किसी जज के खिलाफ कहा कि हमें पता है कि इनका नाम है वो, और यदि अगले रिलीज में आ ही गया उनका नाम तो इट इज अ ट्रुथ, यू कैन नॉट बी. और इफ इट इज इन पब्लिक इंटरेस्ट, कि आपने जो भी कहा उसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ बट इट इज इन द लार्जर गुड ऑफ द पीपल, देन यू विल नॉट. आप क्वेश्चन था. हाँ अच्छा, आप बताइए. हाँ किसका? अच्छा शूज वाला. अच्छा हाँ हाँ. नहीं उन्होंने माफ कर दिया था उनको, और वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं होगा ना, वो इंडिविजुअल है ना. इट्स बट आई डोंट थिंक कि केस हुआ उसका.
जब जज खुद ही कह रहे हैं कि हमने माफ कर दिया उनको, तो क्यों? हाँ, कौन सा जजमेंट? हाँ, अच्छा, गॉड कैन नॉट कम ऑन। अरे पब्लिक सेंटिमेंट तो बहुत चीज से हर्ट हो जाता है, उतना नहीं सोचेंगे। इट्स नॉट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, नहीं हो। ऐसा कोई नहीं होता। ठीक, चलो नाउ नेक्स्ट राइट। इनफैक्ट एक पैराग्राफ इस पे कंक्लूजन पैराग्राफ लिख दो। राइट, द सुप्रीम कोर्ट in S. Molgaonkar case, 1978 has declared, मैं बता रहा हूँ, in S. Molgaonkar case has declared that even courts cannot be beyond fair criticism, ठीक। अब राइट, दिस वाज अ केस ऑफ द इमरजेंसी टाइम। हमने एक केस का जिक्र किया था, दैट वाज द एडीएम जबलपुर केस। ठीक है, दिस एडीएम जबलपुर केस of 1976, it was a decision of 5 judges, and this decision was 4:1. 4 judges were in favor of government, 1 was against government. In a way, the prime question which was asked, that can we have a law that will not respect fundamental right? एक कानून लाया गया था कि किसी को भी अरेस्ट कर लिया जाएगा and it will not be required to produce him before the judge, जो कि एक मैंडेट होता है। So in this matter, that's why this is also called as habeas corpus case, क्योंकि जब भी अरेस्ट होता है, then you have to get that particular person before the judge within 24 hours, excluding the travel time. But यहाँ पे उस चीज को रिलैक्स किया गया कि आपको ले जाया जाएगा जेल में, और it's not required. Now when this question was asked from the Supreme Court said कि जब emergency लगी हो, then fundamental rights they don't live. Even Article 21 भी नहीं रहता. So it is considered as one of the worst judgments of the Supreme Court. जो मैंने बताया केस पुट्टास्वामी में इसी को overrule किया गया. The judiciary, the 9 judgment themselves said that this is the worst kind of judgment that judiciary could have given. Now while writing on this, one of the authors, A.G. Noorani, he wrote an article in Indian Express criticizing this particular judgment. ठीक, and S. Molgaonkar, he was editor-in-chief of Indian Express. Now reacting on this, the judges 1976 में Justice A.N. Ray, I think Justice A.N. Ray or Justice M.H. Beg, he was the Chief Justice, he took suo motu cognizance of this. इसीलिए वहां पे unknown दिख रहा है, कोई गया नहीं था, it was suo motu cognizance. और उन्होंने कहा कि we should punish this person. A.G. Noorani has written this article, and S. Molgaonkar, who is the editor-in-chief of Indian Express. In fact, Indian Express के एक ऐसा न्यूज पेपर रहा था जो कि throughout the emergency it opposed to the policies of government. So this contempt of court was initiated against A.G. Noorani and S. Molgaonkar, but surprisingly it was a 3-judge bench, okay, and the
decision was 2:1 and it was in favor of those who had written the articles. In fact, the two judges, they went against the Chief Justice of India, Justice M.H. Beg, and declared that even court cannot be beyond of fair criticism. ये democracy है. So democracy में जैसे legislature को criticize किया जा सकता है, executive को criticize किया जाता है, similarly even the judiciary is not beyond fair criticism. And this case is considered as the milestone case. अभी भी जब भी contempt of court के matters आते हैं, the petitioner refers to the S. Mulgaonkar principle. ठीक है, तो ये इसका. Now right, next. Article 130, एक simple सा. Next paragraph. Article 130 declares that the Supreme Court shall sit in Delhi or at any other place as the CJI may decide, as the Chief Justice may decide, with the approval of the President. With the approval of the President. So under this, इसीलिए बात चल रही है रीजनल बेंचेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को लेके कि वाई शुड अ पर्सन फ्रॉम केरला तमिलनाडु विल ट्रैवल टू दिल्ली. ठीक है, मान के चलो जो इसके आसपास है एनसीआर रीजन में, उनके लिए इट इज कन्वीनियंट. वाई शुड अ पर्सन फ्रॉम लेट अस से नॉर्थ ईस्ट शुड ट्रैवल टू दिल्ली. So there should be at least 3 or 4 more benches, maybe in Chennai, in Mumbai, in Kolkata, so that see justice का एक principle है कि justice should also be accessible. यदि मुझे लगेगा कि justice मिलेगा सुप्रीम कोर्ट में but I cannot afford to go to Delhi, then itself shows that principle of justice is not fulfilled. Now right, next, federal disputes. Federal disputes. आर्टिकल 131 से कौन किस चीज के लिए? नहीं, वो तो एग्जीक्यूटिव डिसीजन से आर्टिकल 130 तो इतना ही कह रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डिसाइड करेंगे विद द अप्रूवल फ्रॉम द प्रेसिडेंट. सो इट इज नॉट टॉकिंग अबाउट दिस. फेडरल डिस्प्यूट्स. Now we have one article, Article 131. एक term होता है that is called as original jurisdiction. Original jurisdiction means that what are those matters on which you can directly go to the Supreme Court. ऐसे आप सुप्रीम कोर्ट पहुंच कैसे सकते हैं? One is through Article 32, violation of fundamental rights. You can directly go to the Supreme Court. Second is Article 131. Whenever there is a federal dispute, states and states union, then you can directly go to the Supreme Court. Or you can go to the Supreme Court through the appellate mechanism, Article 132 to 136. You can go to the Supreme Court थ्रू रिव्यू पिटिशन. सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को ही आप चैलेंज कर सकते हैं. ठीक है. और यू कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट, नॉट यू बट प्रेसिडेंट कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट थ्रू आर्टिकल 140. ये तरीके हैं टू रीच टू द सुप्रीम कोर्ट. नाउ आउट ऑफ दिस इज कॉल्ड एज द ओरिजिनल jurisdiction. बिकॉज आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं. दिस इज कॉल्ड एज ओरिजिनल एंड एक्सक्लूसिव jurisdiction.
that means in such matters, federal dispute, you can go to the Supreme Court and you can go only to the Supreme Court, original and exclusive jurisdiction. This is called as appellate jurisdiction. आप lower courts, high courts उसके through जा रहे हैं, ठीक. और even you are challenging tribunals also. यहाँ पे एक exception है that armed forces tribunal के decision को नहीं ले जाया जा सकता, बाकी सारे tribunals को हम देखेंगे डिटेल में. This is again the review jurisdiction and this is what we call as advisory jurisdiction. आप सुप्रीम कोर्ट इन्हीं रास्तों से पहुंच सकते. Now when we talk about article 131, it is giving original and exclusive jurisdiction. ठीक. Article 131 says that when there is a federal dispute of legal nature, फेडरल डिस्प्यूट का मतलब ये नहीं है कि टू स्टेट एंड यूनियन और टू डिफरेंट स्टेट्स ऑपोजिशन रूल्ड स्टेट्स हैं, उनके पॉलिटिकल डिस्प्यूट को लेके नहीं जा सकते, ठीक है. सो इट इज फाइनेंशियल डिस्प्यूट्स को लेके नहीं जा सकते. इट इज एक्चुअली अ डिस्प्यूट ऑफ लीगल नेचर. फॉर एग्जाम्पल, केरला वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट अंडर दिस व्हेन द यूनियन ब्रॉट सिटीजनशिप एक्ट CA आया तो वो उसके खिलाफ गए कोर्ट में, बिकॉज उन्होंने कहा कि यदि हम नहीं इंप्लीमेंट करेंगे CA, वी डोंट अग्री विद दिस, बट इफ यू डोंट इंप्लीमेंट इट देन द यूनियन कैन पुट प्रेसिडेंट रूल ऑन अस, क्योंकि ये जरूरी होता है कि आप यूनियन के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें. सिमिलरली छत्तीसगढ़ वेंट टू द कोर्ट अंडर आर्टिकल 131 क्योंकि NIA एक्ट में अमेंडमेंट हुआ था 2018 में, एंड बाय अमेंडिंग दिस एक्ट सम ऑफ द पुलिसिंग पावर was taken, was encroached. Now police is a subject in state list and therefore Chhattisgarh went to the court saying that ये हमारे policing power को encroach कर रहे हैं. So all these are legal matters, legal rights को लेके जाता है. So Article 131 says that whenever there will be a federal dispute of legal nature, then you can come to the Supreme Court and you can come only to the Supreme Court. But Article 131 also says one more thing. It says that if this federal dispute is emerging from a treaty which has been signed before the commencement of the Constitution, 1950 से पहले, 26 जनवरी 1950 से पहले यदि कोई ट्रीटी साइन हुई है और उसके चलते डिस्प्यूट इमर्ज हो रहा है, then you will not go to the Supreme Court under this. Article 131 बस इतनी दो चीजें बोलता है, that federal dispute of legal nature, only Supreme Court will give you the remedy. Federal dispute emerging from a treaty which has come into existence before 26 January 1950, don't come to the Supreme Court. This is what Article 131 says. So, आप taking Article 131, it is saying subject to the provision of this Constitution. अब देखो ये expressions थोड़े important है. It is saying subject to the provision of this Constitution. Remember two expressions that will initiate the articles. हाँ, एक होता है नॉट विथस्टैंडिंग, ठीक है, नॉट विथस्टैंडिंग, और दूसरा होता है सब्जेक्ट टू. Whenever you will see an article starting with notwithstanding, it will be a powerful article, and when you will see an article starting with subject to, it will be lesser powerful article, because ये जो कहेगा, ये कहेगा notwithstanding this thing, मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, this will always happen. And when it is saying subject to, that means subject to the fact कि बाकी सारे provisions पहले लागू कर लिए जाए, then this will be applicable. या फिर जो normally मैं क्लास में एग्जाम्पल देता हूं कि एक स्टूडेंट है, वो कह रहा है कि
notwithstanding anything, I will sit on the first bench. चाहे कहीं कुछ भी हो जाए, ठीक है, अर्थक्वेक आ जाए, हम फर्स्ट बेंच पे बैठेंगे. That means he is giving importance to himself. He is powerful. Second student is saying, subject to the fact that everybody finds place, I will sit on the first. That means यदि कोई फर्स्ट बेंच पे सीट बची रह रही है तब मैं बैठूंगा, otherwise I will allow others to sit. So he is not powerful. Now if you see this article, it is starting with subject to the provision of this constitution, यानी other provision of this constitution. इसमें भी आप देखेंगे दो प्रोविजन होते हैं. कुछ आर्टिकल्स कहते हैं सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस आर्टिकल. दैट मीन्स वो क्या कर रहा है, अपने आप को कमजोर बना रहा है, बट ओनली इन दैट आर्टिकल. बट कुछ कहेंगे सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन. दैट मीन्स every other provision is powerful than. So 131 is saying that subject to the provision of this constitution, the Supreme Court shall, to the exclusion of any other court, have original jurisdiction on such matters. ये क्या है, different permutation combination, states versus states, states versus union, उन सब चीजों का. So basically original and exclusive jurisdiction. किस matters में? On those matters which are related to the legal right, जो मैंने बताया legal nature. नहीं, अभी वो नहीं, आगे आएगा वाटर डिस्प्यूट में नहीं. इसीलिए यहां पे क्या कहा गया, यहां पे क्या लिखा है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन. तो आर्टिकल 262 में जो वाटर डिस्प्यूट है वो अपने आप को इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बताएगा. मतलब वाटर डिस्प्यूट इज नॉट इंक्लूडेड इनटू दिस. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द आर्टिकल. सेकेंड पार्ट ऑफ द आर्टिकल सेज that provided that the said jurisdiction shall not extend to a dispute emerging from any treaty that came into existence before the commencement of this constitution. मैंने बताया था कि आर्टिकल 131 दो चीजें बताता है. फर्स्ट, any federal dispute of legal nature will come to the Supreme Court, exclusion original, and anything emerging from a treaty before 1950 will not come from. What else is excluded from Article 131? इससे water dispute को भी exclude किया गया है. Water dispute, that means if there is a federal dispute because of the sharing of the water, interstate water, that will not come under the Supreme Court. ठीक है, फिलहाल इस पे कॉन्सेंट्रेट करो. ये दोनों प्रोविजन समझ में आ गए. 1950 से पहले कोई ट्रीटी हुई है दो फेडरल यूनिट्स के बीच में, उससे कोई यदि डिस्प्यूट इमर्ज हो रहा है, देन इट विल नॉट कम टू द सुप्रीम कोर्ट. फॉर एग्जांपल 1924 में बिटवीन तमिलनाडु एंड कर्नाटका, मतलब देन मैसूर एंड व्हाट वाज तमिलनाडु नोन बिफोर, मद्रास, मैसूर एंड मद्रास, जो ट्रीटी साइन हुई थी 1924 में कावेरी वाटर को डिस्ट्रीब्यूट करके, उससे यदि कोई मैटर निकल के आ रहा है तो इट विल नॉट कम. तो वो कैसे आया ना, मैं बता रहा हूं. एक्सक्लूजन ऑफ एनी अदर कोर्ट मतलब ये मैटर किसी और कोर्ट में नहीं जाएगा, केवल यही आने वाला है. ठीक है, नाउ ये तो समझ में आता है कि इट कंप्लीटेड द साइकिल. यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो भी डिसीजन देगा, आप खुश है तो ठीक है, अदरवाइज उसको रिव्यू पिटिशन फाइल करो, वो बट दैट विल बी द फाइनल डिसीजन. बट यहाँ पे ये ओपन एंडेड रह गया कि if it will not go to the Supreme Court, then where will that particular dispute be solved? For this, two articles in the Indian Constitution are providing the mechanism. एक आर्टिकल है आर्टिकल 363 क्लॉज 1 and another article is article 143 clause 2. 363 clause 1 and 143 clause 2. They are talking about such kind of dispute. Which kind of dispute? Which is emerging from a treaty which has commenced before the which was signed before the commencement of constitution. अब आर्टिकल 143 क्या कहता है? आर्टिकल 143
Actually, this is the advisory jurisdiction. Article 143 says, इसमें दो clauses हैं, 143 clause 1, 143 clause 2. ठीक है. And it says that whenever President of India, the first one is saying that President of India can ask any question related to the Constitution, ठीक है, related to the Constitution from the Supreme Court. From the, जैसे अभी रिसेंटली तमिलनाडु वाले केस के बाद प्रेसिडेंट ने 14 क्वेश्चंस पूछे थे. So if President of India is facing any ambiguity, she can ask that particular question from the Supreme Court. And the Supreme Court may give response to that particular question. Supreme Court को जरूरी नहीं है कि वो जब प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस पे क्वेश्चन पूछे सुप्रीम कोर्ट को जवाब देना ही पड़ेगा. In fact, out of the 14 question which was asked, only 11 has been answered, 3 has not been answered by the court, because it is not mandatory for the court to give response to the president. Article 143 clause 2 says that president may refer such matter, which is emerging from treaty before 1950 to the Supreme Court, and in this case Supreme Court must answer. ये प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. इस बार तो मेंस में भी क्वेश्चन था आर्टिकल 143 पे. सो यू कैन अंडरस्टैंड इट इज है तो ये एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन. हु इज इनिशिएटिंग दीज क्वेश्चंस? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. नोबडी एल्स कैन. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. इस केस में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वांट्स सर्टेन ओपिनियन ऑन द मैटर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. It will go to the Supreme Court. Supreme Court may answer. Compulsory नहीं. Second is President can refer the matter जो कि emerging from the treaty before 1950 जो कि वहां पे हमने solve नहीं किया था to the Supreme Court, and this case Supreme Court must answer. और ये जो फैसले Supreme Court देगा ना वो minimum 5 judges के फैसले होंगे. Minimum 5 judges. ये कहां लिखा हुआ है? दिस इज रिटन इन आर्टिकल 145 कि जब भी प्रेसिडेंट आपसे सवाल पूछे इट शुड बी अ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच. मिनिमम 5 जजेस विल डिसाइड दिस पर्टिकुलर मैटर. तमिलनाडु वाले केस में भी आपने देखा होगा इट वाज अ 5 जज बेंच. एंड द लास्ट पार्ट इज कि वेदर द ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज कमिंग थ्रू दिस रूट और दिस रूट, none of the opinion is binding on the president. President के लिए कोई भी opinion binding नहीं. वो माने तो ठीक है, नहीं माने तो भी ठीक. It is not binding on the president. And the same thing is written in even Article 363. मैंने बताया ना कि इसका solution कहाँ है? Article 363 में वही बात लिखी हुई है. So basically ये जो प्रॉब्लम हमने सॉल्व नहीं किया था यहाँ पे, now we are pushing that to the president and the president may ask that question to the Supreme Court, और हो सकता है नहीं भी पूछे. वो दोनों स्टेट्स को बुला के और आपस में बात करवा के सोल्यूशन निकल जाएगा. कोई जरूरी नहीं सोल्यूशन निकलेगा then it will go to the Supreme Court. ठीक है. हाँ मैं बता रहा हूँ 363 एग्जैक्टली वही है. आई विल शो यू द आर्टिकल. ठीक है. 131 समझ में आया? ना एक चीज और ध्यान रखना है कि 131 का जो रूट है इट इज इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट सेक्शन 204, क्योंकि वहां पे भी यही था कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, जो यहां पे भी लिखा है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द फेडरल कोर्ट, जो कि आजादी से पहले फेडरल कोर्ट था, जो भी सुप्रीम कोर्ट है, टू द एक्सक्लूजन ऑफ एनी अदर कोर्ट, यहां पे भी वही बात लिखी है, टू द एक्सक्लूजन ऑफ एनी अदर कोर्ट, शैल हैव ओरिजिनल jurisdiction for the dispute between the states. So if prelims में पूछा जाता है, फिर ऐसे पूछा जाता है कि आर्टिकल 131 का रूट कहाँ है? It is in Government of India Act and it is in section 204. 35 Government of India Act 1935. ठीक है. And section 204.
Now come to Article 363 and 143. समझ में आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है? क्योंकि समाचार होते होते थोड़ा दिमाग थक जाता है, बट इट इज इंपॉर्टेंट है. चलो 363 which you are saying कि 363 में क्या है? 363 is saying, now here also try to understand a hierarchy. Notwithstanding anything in this constitution. अब यदि मैं हायरार्की चार्ट ड्रॉ करूं तो 131 was saying that subject to the provision of this constitution, यानी I'll be very low, subject to the provision of this constitution. 363 saying notwithstanding anything in this constitution, चाहे मतलब that means I am powerful with rest of the constitution, that means I'll be here. But ये भी कह रहा है कि notwithstanding anything in this constitution but subject to the provision of 143, that means I am less powerful than 143. Try to understand, this is how the relation between articles is established. कि ये तो singularly एकदम बहुत साफ शब्दों में कह दिया कि subject to the provision of constitution, that means I am least powerful, सबसे नीचे. It was saying that notwithstanding anything in this constitution but subject to article 143, yani 143 will be more powerful than me. What will happen? Subject to the provision of this article 143, neither the Supreme Court nor any other court will have jurisdiction on these matters. वही मैटर यहां पे लिखा है जो मैंने आपको बताया. Federal dispute emerging from the treaties entered before the commencement of the constitution. वही बात लिखी ना, कुछ अलग तो नहीं लिखा है, बट ये हमें रास्ता दिखा दे रहा है कहां तक का? 143 तक. इट इज शोइंग अस द वे टू 143. दैट दिस इज, ये तो हमने 131 में भी पढ़ाई, बट इट इज सेइंग सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ 143. एंड देयरफॉर नाउ द क्यूरियोसिटी शुड कम कि भाई 143 में क्या लिखा हुआ है? तो 143 में वही लिखा है जो मैंने आपको बताया. मैंने बोला there are two clauses. The first clause says, try to reconcile with what I said, that if at any time it appears to the president, president will initiate it, that a question of law of public importance has arisen, then the president can seek the opinion of the Supreme Court. He may refer the matter to the Supreme Court and court may, इसीलिए मैंने कहा कि it is not compulsory for the court to answer. The court may give its opinion. ये पहला जो मैंने बताया. Second, this is what I was, this route. Second, the president may, again it is not compulsory. अब ये उस मैटर्स की बात कर रहा है which is emerging from the treaty before 1950, that the president may, हो सकता है कि if it was between Tamil Nadu and Karnataka, the president will ask the leaders from both the states to come, sit and talk and get a solution. If it fails, then president may refer such matter, which matter? Which is mentioned in the proviso of article 131. Proviso means जो paragraph नीचे लिखा हुआ था. Dispute of the kind mentioned in the said proviso for the opinion of the Supreme Court, and the Supreme Court must, Supreme Court को opinion तो देना ही पड़ेगा. And both the opinion of course is not the binding on the President of India. So article 131 is one article which is talking about the original and exclusive jurisdiction. अब आर्टिकल 131 में क्या नहीं आता है? एक तो ये मैटर्स डायरेक्टली नहीं आते, ये सुप्रीम कोर्ट के पास इनडायरेक्टली आ रहा है, isn't it? Not coming directly. And there are some other matters also. Political matters नहीं आते हैं उसमें, फाइनेंशियल मैटर्स डोंट कम. ठीक है, वो फाइनेंस कमीशन उसको सॉल्व कर लेता है. ठीक है, वाटर डिस्प्यूट डज नॉट कम अंडर दिस. वो फेडरलिज्म जब करेंगे तो दैट कैन बी अ डिफरेंट. आपका कुछ क्वेश्चन था?
अगेन यस यस if it is challenged in the Supreme Court, yes. नहीं, बिना चैलेंज हुए कैसे दे सकते हैं? नहीं नहीं, बिना चैलेंज हुए तो वो सुओ मोटो एक्शंस ऐसे केसेस में नहीं लिए जाते हैं. बट व्हाट वी सॉ इज कि ये मैटर सुप्रीम कोर्ट के पास आ ही जाते हैं. जैसे कि इस केस में हमने देखा दैट दिस वाज गोइंग आउट ऑफ सुप्रीम कोर्ट्स परव्यू, बट ये 143 होते हुए कहाँ आ गया? सुप्रीम कोर्ट के पास ही आ गया. ठीक. सिमिलरली एक और मैटर रिलेटेड टू दिस इज दैट इज इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट, और आर्टिकल 262 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट और एनी अदर कोर्ट विल नॉट हैव जुरिस्डिक्शन ऑन दैट. ठीक है. बट हम देखते हैं कि कावेरी वाटर डिस्प्यूट, सभी वाटर डिस्प्यूट सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंच जाते हैं. ये ऐसे होता है क्योंकि एक आर्टिकल है, आर्टिकल 136 स्पेशल लीव, हम देखेंगे उसको. थ्रू दैट इट विल कम टू द सुप्रीम कोर्ट. ठीक है. तो सुप्रीम कोर्ट एट प्रेजेंट टाइम कुछ एक्सेप्शनल ही केसेस होंगे जिसमें सुप्रीम कोर्ट अपने रिव्यू नहीं दे सकता है, अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट गिव्स रिव्यू ऑन दैट. नाउ द सिचुएशन दैट यू आर टॉकिंग अबाउट, कि बेसिकली व्हाट आई अंडरस्टूड इज कि आप ये कह रही हैं कि यदि कोई दो स्टेट्स के बीच में कोई ऐसे ट्रीटी साइन हुई है, लेट अस से इन 1940 बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट डिड नॉट गो टू द सुप्रीम कोर्ट, ये प्रेसिडेंट के पास गया, प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट के पास भेजा, सुप्रीम कोर्ट ने अपना ओपिनियन दिया. नाउ व्हाट द गवर्नमेंट विल डू इज दैट द गवर्नमेंट विल मॉडिफाई दिस ओपिनियन. Government will modify this opinion, but this modified opinion will be in the form of a law or any executive decision. Government का कुछ तो decision हो. Let us assume that now this law is violating or it is creating federal dispute. This law is creating federal dispute. Union ने कुछ उसमें changes किए अपने हिसाब से, और now this law is creating the federal dispute. Now this law can very well be challenged under article 131 now, ना, क्योंकि ये law before constitution का थोड़ी है. This is after the constitution. ये तो ओरिजिनली आ जाता है सुप्रीम कोर्ट में, इसको कौन रोक सकता है? इसको तो प्रेसिडेंट के थ्रू जाने की जरूरत ही नहीं. सो दैट्स व्हाई ऐसा ना कि एनी काइंड ऑफ एक्शन इट कैनॉट बी इम्यून टू द जुडिशियल रिव्यू ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. ठीक है, चलो इसको लिखते हैं. शायरी लास्ट में बचा के रखे थे क्या कि लास्ट में बोल देंगे शायरी? हम 5 मिनट है वो बीत जाएगा. इस कॉन्टेक्स्ट में शायरी, हाँ, नहीं, एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात करते हैं तो मैंने बताया कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में चाहे एक और मैटर, इट वायलेट्स द कोलिजियम सिस्टम में, मैंने कहा कि इट वायलेट्स द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस दैट यू कैन नॉट बी अ जज इन योर ओन केस, है ना. इस पे रिलेटेड एक शेर है कि आप ही की है अदालत, आप ही मुंसिफ भी हैं. अदालत कोर्ट, मुंसिफ जज. आपकी ही अदालत, आप ही मुंसिफ भी हैं. ये तो कहिए कि आपका ऐबे हुनर देखेगा कौन, कि आपकी कमी कौन देखेगा. ताली बजाओ. अच्छा, एक इस थीम पे एक और है कि उसी का है शहर, वही मुंसिफ वही मुद्दई. शहर उसी का है, जज वही है और फरियादी भी वही. उसी का है शहर, वही मुद्दई वही मुंसिफ, हमें मालूम था कसूर हमारा निकलेगा. ताली बजाओ. एक सस्ता वाला सीन आता है जो तुमको समझ में आएगा. ये तो समझाना पड़ता है. एक सस्ता वाला ये है कि
अब सब कुछ बताया जाए तो अच्छा रहेगा, लेट द ट्रांसपेरेंसी बी देयर, सुना होगा तुम लोगों ने कि अब सब कुछ बताया जाए तो अच्छा रहेगा, अब कुछ न छुपाया जाए तो अच्छा रहेगा। और अदालतें सजी हैं तुम्हारे मोहल्ले में तो कोई बात नहीं, अदालतें सजी हैं तुम्हारे मोहल्ले में तो कोई बात नहीं, लेकिन गवाह हमारे मोहल्ले से भी बुलाया जाए तो अच्छा रहे। और इसकी लास्ट दो लाइन है कि तोहमतें लगी हैं मुझ पर तेरे गली से गुजरने की, इल्जाम लगा है मुझ पे तेरी गली से गुजरने की, रास्ता तेरा भी बाजार जाने का बताया जाए तो अच्छा रहेगा। तो देयर शुड बी ट्रांसपेरेंसी। चलो एक पैराग्राफ तो लिख लो कम से कम, चलो लिख लो, 5 मिनट है, ऐसा नहीं करो, ठीक है, राइट। अगले क्लास में भूल जाओगे इतना जो हम बताएं। अभी क्या लिखा? हाँ, आर्टिकल 131। अच्छा, तभी से हम कथा ही कह रहे थे, क्या कुछ लिखा नहीं था? चलो राइट। एज पर आर्टिकल 131, एज पर आर्टिकल 131, अब इसको पॉइंट्स में लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट, एनी फेडरल डिस्प्यूट emerging from the legal rights of the federal units can be raised only in the Supreme Court. Only in the Supreme Court. Next second point, right? Federal disputes emerging from the treaties executed before the commencement of the Constitution shall not be addressed in the Supreme Court through Article 131. अब यहाँ पे एक सबहेडिंग लिखो, where such disputes can be resolved. Where such disputes can be resolved. Right. As per Article 363, such disputes can be addressed through the provisions of Article 143. Through the provisions of Article 143. हाँ, नहीं अभी बस 143 लिखो, थ्रू आर्टिकल 143। अब इसमें एक सबहेडिंग लिख के छोड़ दो कि व्हाट इज आर्टिकल 143, व्हाट इज आर्टिकल 143।
ठीक है, विल सी इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।